Okay, so in this video we're going to be looking at some paper 1 questions for the first topic, that is physical quantities and units. So let's begin. The first question is, which is an SI based unit? Now the first option says current. Current is a physical quantity, not a unit, so this is wrong. Gram is a unit, but it is not an SI based unit. The SI based unit is kilograms. Okay, so this one is also wrong. Kelvin is an SI based unit for temperature, and volt is also not an SI based unit. Question number 2 says, which definition is correct and uses only quantities rather than units? So we do not want units, we only want quantities, and the definition has to be correct as well. So the first option says density is mass per cubic meter. Now meter is a unit, so the first option cannot be correct. Option B says potential difference is energy per unit current. Now potential difference की definition होती है energy per unit charge. So the definition is incorrect, so this cannot be the option. Option C says pressure is force per unit area, and that is correct. The definition is correct as well, and force and area both are quantities, not units. And option D says speed is distance traveled per second. Second is a unit, so the option cannot be correct. Question number 3, which pair of units contains one derived unit and one SI based unit? हमने पढ़ा था कि derived unit क्या होता है और SI based unit क्या होते हैं. So ampere and coulomb, देखो coulomb एक derived unit है और ampere is a base unit, so option A is correct. Now kilograms and Kelvin are both base units, so this option cannot be correct. Similarly, meter and seconds are also both base units, so this cannot be correct either. And Newton and pascals are both derived units, so this will be incorrect. Right. So question number 4 says, which row? I'm gonna write question number 4 here. This is question number 4. Question number 4 says, which row shows an SI base quantity with its correct unit? Now the base quantity is current and the unit is ampere, so option B. Question number 5, which row shows a base quantity with its correct SI unit? Right, so option A is correct. Current is a base quantity and its unit is ampere. Mass cannot be correct because the unit should be kg. Similarly, temperature की unit होनी चाहिए Kelvin, and weight is a derived quantity. Right, so these 3 options are incorrect. Right, question number 6, which is a pair of SI base units? So we want 2 base units, right? So ampere is a base unit, joule isn't. Coulomb is not a base unit, but second is. Kilograms is a base unit, so is Kelvin, so option number C. And option D says meter and Newton, so meter is a base unit, Newton isn't. Question number 7, which pair of units are both SI base units? Right, so ampere and Kelvin, option B. Which is the, now from here the type of questions change, ठीक है, ये दूसरी type of question start हो रही है यहाँ से. So in this we have to derive base units, ठीक है. So what is the joule in SI base units? Now जूल हमें पता है कि किसका यूनिट होता है, एनर्जी या फिर वर्क डन. आई एम गोना यूज़ वर्क डन क्योंकि उसकी वर्किंग थोड़ी आसान होती है. सो वर्क डन इज़ व्हाट? वर्क डन इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है. आई एम गोना राइट एस, ठीक है. फोर्स इज़ व्हाट? फोर्स इज़ मास टाइम्स एक्सेलरेशन एंड वी मल्टीप्लाई दैट बाय डिस्टेंस. मास के यूनिट्स होते हैं बेस यूनिट्स के जी. एक्सेलरेशन ए के होते हैं ms-2 एंड s इज डिस्टेंस, उसके होते हैं मीटर्स. सो मेरे यूनिट्स बन जाएंगे kg m2 s-2 एंड दैट इज ऑप्शन डी. Right, question number 9, what is the unit of resistance when expressed in SI base units? ठीक है. So what I'm gonna do is I'm gonna write Ohm's law, ठीक है. Ohm's law हमें क्या कहता है? V equals to IR. I'm gonna make R the subject, so R is gonna be V over I के यूनिट्स होते हैं एम्पेयर. I'm gonna write that. V के यूनिट्स हमें अलग से डिराइव करने पड़ेंगे. So what I'm gonna do is I'm gonna use the formula for power, ठीक है. P equals to IV मैं यूज़ करने वाला हूँ. Right, so मैं यहाँ से V को सब्जेक्ट बना लेता हूँ. This will be P over I. Now what is power? Power is work done over time, ठीक है. and work done के यूनिट्स हमने अभी ऊपर डिराइव किए हैं. दे आर kg m2 s-2, so I'm gonna write kg m2 s-2 and this is divided by time जिसके यूनिट्स होते हैं seconds, and this whole thing is divided by current जिसके यूनिट्स होते हैं ampere,
ठीक है. So I'm gonna like simplify this. Let me move this a little bit to the left. So right, I'm gonna simplify it right here. So kg m2, now s minus 2 है और वो डिवाइड हो रहा है एक और s से, so this is gonna become s minus 3 and ampere is gonna come ऊपर in the numerator, so this is gonna become a minus 1. ठीक है. So this is the unit for power. ठीक है, not power, sorry, this is the unit for volt, sorry, potential difference या voltage. ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा. So kg m2 s minus 3 a minus 1. ठीक है. So my overall unit is gonna become, this a is gonna come in the numerator, so this will become kg m2 s minus 3 and a minus 2. So kg m2 s minus 3 a minus 2, option B. Right. Question number 10. One property Q of a material is used to describe the behavior of sound waves in the material. Q is defined as pressure P of the sound wave divided by the speed V of the wave and the surface area of the material through which the wave travels. We have to find SI based units of Q. Pretty straightforward question है. P हमें बोला हुआ है क्या है, pressure है. Now pressure is force upon area. Force के units होते हैं kg ms minus 2. Area is meters square. So this is gonna be divided by meter square. Meter square को मैं ऊपर लाऊंगा in the numerator, so this is gonna become kg m minus 1 s minus 2. ठीक है. Now VA के यूनिट्स हम साथ डिराइव करेंगे. V is sound. ठीक है, साउंड के यूनिट्स होते हैं ms minus 1 and this is multiplied by area. एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर, so this is gonna become m3s minus 1. ठीक है, और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको आपस में हम डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज़ गोना बिकम kg इज़ गोना रिमेन द सेम. नाउ m माइनस 1 ऊपर है और m3 डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाऊंगा तो m माइनस 3 हो जाएगा एंड माइनस 3 माइनस 1 इज़ माइनस 4. सो kg m माइनस 4 एंड s डिनोमिनेटर में माइनस 1 में है, न्यूमरेटर में आके प्लस 1 हो जाएगा एंड माइनस 2 प्लस 1 इज़ माइनस 1. सो kg m माइनस 4 s माइनस 1. So option C. Right. Question number 11. What is the unit of power expressed in SI based units? ये हमने ऊपर derive किया power का. I'm gonna do it again. ठीक है. So power is work done per unit time. ठीक है. Power is work done over time. Work done is force into distance. So this is going to be kg ms minus 2 into distance is m and divided by seconds. So the unit becomes kg m2 s minus 3. Right. kg m2 s minus 3, option A. Question number 12. What is the unit of weight in terms of SI based units? Now weight हमें पता है weight क्या होता है. weight एक force होती है. ठीक है, तो force के units क्या होते हैं, mass times acceleration. So kg ms minus 2. Right. Question number 13. Three of these quantities have the same unit. Which quantity has a different unit? एक एक करके derive करते हैं. Energy is what? Energy is kg m2 s minus 2. If you like do a lot of questions, so आगे जाके ये यूनिट्स याद होने शुरू हो जाते हैं. लाइक एनर्जी के यूनिट मुझे याद है कि जी m2 s minus 2 होते हैं एंड डिस्टेंस इज़ m, सो द यूनिट बिकम्स kg m s minus 2. ठीक है. फोर्स के यूनिट्स होते हैं kg m s minus 2, सो द फर्स्ट टू यूनिट्स आर लाइक सेम. पावर इनटू टाइम. ओके, सो पावर के यूनिट्स हमने अब ऊपर डिराइव किए हैं. दे आर राइट है kg m2 s minus 3. सो kg m2 s minus 3 multiplied by time जो कि s होता है. So the unit is gonna become kg m2 s minus 2. ठीक है. So the first two are correct. The third one is different. So correct is like apparently the option is C. फिर भी हम ऑप्शन डी देखते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है. देखो मोमेंटम फोर्स की डेफिनेशन होती है. डायनामिक्स में पढ़ेंगे कि फोर्स की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स के यूनिट्स होते हैं kg ms minus 2. So yes, option C is different and that is the correct answer.
Question number 14. What is a possible unit for the product Vi, where V is the potential difference across the resistor and I is the current through the same resistor? Right. So now पावर की पावर की हमने हाँ पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा इन करंट इलेक्ट्रिसिटी पावर इज़ आई वी या फिर वी आई एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. सो हमसे इसमें पावर की यूनिट्स पूछे हुए. ठीक है. नाउ बेस यूनिट नहीं पूछे हुए, हमसे सिर्फ यूनिट पूछे हुए. सो आई एम गोना डू समथिंग जस्ट लाइक लुक एट दिस. ठीक है. सो पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? पावर के यूनिट्स हमने अभी ऊपर डिराइव किए हैं. दे आर के जी ये के जी एम टू एस माइनस थ्री. ठीक है. पावर के यूनिट्स होते हैं के जी एम टू एस माइनस थ्री. सो के जी एम टू एस माइनस थ्री. ठीक है. मैं क्या करता हूँ कि मैं के जी एम एस माइनस टू को अलग कर लेता हूँ. ठीक है. एंड वॉट आई हैव बिन लेफ्ट विथ इज़ एम. ठीक है. एक एम बचा क्योंकि एक एम यहाँ पर आ गया है और एक बचा एस माइनस वन. सो दिस एस माइनस वन क्योंकि माइनस टू यहाँ पर आ गया. सो दिस इज़ गोना बी माइनस वन. सो गौर से देखो कि ये के जी एम एस माइनस टू क्या है. दिस इज़ फोर्स का यूनिट. ठीक है. एंड फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन. ठीक है. सो इफ़ आई लाइक कीप द न्यूटन एज इट इज़ और एम एस माइनस वन को मैं यहाँ लिख दूँ, सो मेरे यूनिट्स क्या बने? न्यूटन मीटर पर सेकेंड. एंड दैट इज़ ऑप्शन डी. राइट. Okay, the last question for this video, question number 15. What is the unit? What in terms of SI base units? Now, what किसका यूनिट होता है? पावर का. ठीक है. एंड पावर के यूनिट्स मैंने दो दफ़ा डिराइव किए हैं ऊपर. आई एम गोना डू इट अगेन. Power is work done over time. Work done is force into displacement. Force के यूनिट्स होते हैं के जी एम एस माइनस टू. Distance is m. So this is divided by time. So my unit becomes kg m2 s minus 3. So kg m2 s minus 3, m2 kg s minus 3, same thing, option C. So yep, this was part 1 of questions.